Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Nashtaprayesha Badhesha Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Rattama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtake Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Hare Krishna. Welcome for today's session. So I already started the fourth chapter of Bhagavad Gita. So this fourth chapter we will recite also, but before that we will like to know the glories of the fourth chapter of Bhagavad Gita. Very important. So in a Banaras, there was one Lord Vishnu is telling this to Lakshmi. Banaras, there was a great saintly person named Bharat. Different Bharat, not Jad Bharat. He used to every day recite the Bhagavad Gita in the temple of Vishwanath. Earlier, when he was traveling, he went to one pilgrimage place. And while going, he wanted to take some rest. So he chose some two bel trees. So he took rest under the bel trees. And he recited his daily Bhagavad Gita chapters and daily sadhana, and he recited them. He was traveling to the holy place called as Tapovan. Tapodan, to take darshan of Lord Krishna. Then when he again went back to his own place, Vishwanath. So when he went, those trees they started to dry. Within 5 or 6 days, both trees completely dried and died. The two stalls who had been living in those trees took the next birth as the daughters of very pious Brahmin. And when the girl reached 7 years, they went to pilgrimage to Kashi. And while wandering in the Kashi, they happened to see the Bharat in the Vishwanath temple. And when they saw the Bharat, they immediately went and offered pranam and started to glorify him. By your mercy, we got the human life. Bharat, when he heard, he said, I don't understand what happened. Then they started to tell. Once they said that we were the two Apsara in the heavenly planet. Once upon a time in the
He was Godavari, bank of Godavari, this place called Chinnappa. There is named Rishi Sachata. Very nice Rishi. He was doing a lot of austerity, tapasya, slowly. Please, Lord Vishnu. He was pleasing, the tapasya was going on. Lord Brahmaji was coming and asking questions from him. But one person became insecure, Indra. He thought he may take my position. So he sent two apsaras, both of us. But we never wanted to go, but Indra told us that we have to go. To seduce him, fall down from the speech. So they said, we went there, started to dance, so that we can entice him. And they were very closely dancing. And while dancing, their clothes fell down. The sage became very angry. He put water, curse them that you become the tree. You are behaving like a tree. So become the tree. Then both offered pranam. We are here because of Indra. Please forgive us. Please give your mercy. They said, okay, because you are innocent, I will give a blessing to you. That you will meet a saintly person. And because of him, you will go to the spiritual world. So then after that, we are waiting. Once you came there, you rested under the tree. You recited the fourth chapter of Bhagavad Gita. And because of that, we got the birth in the Brahmin family. And we also got a boon that we will remember our previous life. And from that time, we are reading fourth chapter of Bhagavad Gita. Then Lord Vishnu said to Lakshmi, these two girls recited fourth chapter throughout their life. And after that, they went back to Maya abode. They came back to Maya abode. Vaikuntha. Jai Krishna Bhagavan ki Jai. So actually, why these glories of Bhagavad Gita are important? We have such a big solution, but we are not taking the solution properly. We should not make people fear unnecessary. We should encourage people. Bhagavad Gita recitation, Bhagavatam, every day there has to be recitation of the mantra. We don't need any other solution. Somebody can recite at least 3 chapters of Bhagavad Gita, 1 chapter of Bhagavad Gita. And once you recite, you will be tempted to read also. That is a hook. When you recite, otherwise, how many of you read every day 1 chapter of Bhagavad Gita? People say so many, Prabhuji, recitation क्यों करना है? पर कितने लोग पढ़ते? सच बोलना है. हर दिन एक चैप्टर भगवत गीता कौन पढ़ता है? हर दिन एक चैप्टर भागवतम कौन पढ़ता है? बस बोलने का. नहीं हमें पढ़ेंगे. पढ़ो ना. दिन भर पढ़ो, आप सब छोड़ के पढ़ो, आपका फायदा ही हो जाए. लेकिन हम पढ़ते ही नहीं. तो इसलिए शास्त्र में ऐसा हुक दिया है, भगवत गीता चैप्टर पढ़ेंगे ऐसा. बिकॉज वी आर suffering because of the material problem. We are material conscious. We are suffering under the 3 modes of the material nature. We are not liberated. Ask yourself. We are under 3 modes of the material nature. So, when you read Bhagavad Gita chapter, at least you will be tempted. क्या लिखा क्या इसके अंदर? है ना? You will come to know, अरे इसमें लिखा क्या है? मुझे देखने दीजिए इसमें लिखा क्या है. And when you start reading translation, you will say, what Prabhupada has written, let me see also. That is the way. That is the way. The scripture don't tell that how you will get liberated. Just say you will be liberated. But you may undergo some suffering also, because Krishna wants. That they will not tell. Okay. Like Pandava also have to go to forest. But they liberated now, but they have to go to forest also. But suffering will be there or no.
pain will be there or no, but suffering is optional. It is up to you whether I have to suffer or not. Suppose Yamaraj got cursed from Mandava Muni that you will become Shudra. He said, thank you very much. Because then he got some leave from the duty of Yamaraj. He came now. He became Vidura and he's traveling. So this curse is good for him now. So because of the bhakti, you will see the curse also very good. That one Brahmin cursed Lord Chaitanya that you will never get material happiness. He said, thank you very much. Because he wanted to take sannyas. Brahman is thinking, I am cursing that he will not material benefit. Very good. Daksha gave Narad Muni that you will be traveling, you will not never live in one place. Very good. And because of that, so many people are becoming devotee because of Narad got curse that he has to travel. So even the materialistic person may give curse. The Krishna conscious person is very good for him. Is very good for him. So therefore, suffering will be there, pain will be there, but whether suffering is there or not, it is up to you. It is up to you. Okay. If somebody gets happy, very good. Because Shani will destroy your all material problem. Material wealth. He will make you detached. So very good. Welcome, Shani. Please come. Make me detached. I am attached to this material world. He will come and forcefully whip me out. Mangal planet. Very powerful. He will make you Vairagi. Mangala is, Vesh is only like sadhu. If you see the planets, Mangal is like a traveling monk. Sannyas cloth. Shani also is like. So these planets are the devotees. When people are not ready, they'll make you. So therefore, you recite every day Bhagavad Gita. So let's recite now. Open your Bhagavad Gita. I will force you to recite. Even if you don't recite. 4th chapter. Scripture is full of encouragement to the people. So that somehow or other they take bhakti. One day, second day, sometime start taking. Got the 4th chapter. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता कृष्णार्पणमस्तु। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्त टुगेदर। और आप में से किसी का वीडियो ऑन, आप ऑडियो ऑन कर दो कि मुझे सुनने दो, आप भी बोल रहे हो, है ना। सबको करना है, सब करो। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् प्राह मनुरिश्वाक वेद ब्रवीत। एवं सब बोल रहे हैं ना, तो पुटपुटा जो कर रहे हैं, बोलना है। सब वीडियो आप ऑडियो ऑन करो, मुझे सुनने दो। एवं वरं एवं राजर्षयोगो कालेन योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्। वीडियो ऑडियो ऑफ करो। अर्जुन उवाच निमाय प्रभु जी आप रखो, आप कर, आप बोल के दिखाओ कैसे बोल रहे। मैं बोलूं प्रभु? हाँ, आप, हम दोनों बोलते, बाकी लोग सुनो, नहीं तो पूरा गड़गड़ हो रहा है। बाकी ऑफ करो। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदम् उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर्म कर्म च धर्म मे कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तां तथैव तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः काङ्क्षतः कर्मणा काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं कर्म गुणकर्म विभागशः तस्य तस्य कर्ता कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। इमां कर्माणि मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। किं किं कर्म कर्म किम् अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात्। कर्मणो ह्यपि कर्मणो यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणः बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् बुद्धिमान् मनुष्येषु मनुष्येषु यः प्रयुक्ता स युक्तः कृत्स्नम् यस्य कर्म कृत् सर्वसमारम्भा काम कामसङ्कल्प संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पण्डितः पंडितं बुध त्यक्त्वा त्यक्त्वा कर्मफलं फलासङ्गं नित्यतृप्तो नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् प्राप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभः सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कृतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मापर्णं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। दैवमेवापरे दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वेन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञान यज्ञाश्च यतः संशितव्रतः आह्वाने जुह्वति प्राणं प्राणपानं तथा परे प्राणपानगतिरुत्वा प्राणायाम अपरायणः अपरे अपरे नियतः नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते एते यज्ञविद्यो यज्ञकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः अन्य पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम एवं बहुविधा एवं यज्ञा बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यं द्रव्यं श्रेयान् द्रव्यम् अया यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं ज्ञानयज्ञः परन्तप कर्म सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिपातेन प्रश्नेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन येन भूतान्य भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः पापकृत्तमः सर्वं सर्वं ज्ञानं ज्ञानत्वेनैव
वृजिनं सन्तरिष्यसि यथेधांसि यथैधांसि समिद्धो अग्निर् भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन ज्ञानेन सदृशम् पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञानश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः संन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। आपको एक एक्सेल शीट भेजता हूँ मैं, जिसमें ना भगवत गीता इंग्लिश और संस्कृत में दिया हुआ है, उससे आपको रिसाइटेशन में आसानी। 1 मिनट आपको देता हूँ। एक मिनट। एक मिनट। So we are starting from chapter 4, slok 2. So we have covered the glories of knowledge about Krishna, how this parampara was destroyed, how this Bhagavad Gita parampara is coming. Okay. So we'll read the second sloka. What the number? From 1 onwards, Prabhuji, I can read. Hey, we have to. I think we have started second sloka. We have covered the first sloka. Oh, no. Prabhuji, first was done, Prabhuji, second से start करना। That's नहीं, what second. ये नंबर वही नंबर second Prabhuji, कभी कभी हम नीचे से चालू करते हैं ना पढ़ना, तो हाँ नहीं नंबर 1 से चालू करो। ठीक प्रतीक है। सेकंड एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगेनश्च परन्तपः। Translation: This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession
and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it appeared to be lost. Purport. It is clearly stated that the Gita was specially meant for the saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. Certainly, Bhagavad Gita was never meant for the demonic persons who would despite its value for no one's benefit, who dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims. As soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous commentators, there arose a need to re-establish the disciplic succession. 5,000 years ago, it was detected by Lord himself that the disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of the Gita appeared to be lost. In the same way, at the present moment also, there are so many editions of Gita, especially in English, but almost all of them are not according to authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the Supreme Personality of Godhead Krishna, although they make a good business on the word of Shri Krishna. This spirit is demonic because demons do not believe in God but simply enjoy the property of the Supreme. Since there is a great need of an edition of Gita in English, as it is received by the Parampara disciplic succession system, an attempt is made here with to fulfill this great want. Bhagavad Gita, accepted as it is a great boon to humanity. But if it is accepted as a treatise of philosophical speculations, it is simply a waste of time. So this what Vidya Bhushan has told, that the sampradaya of this yoga in this world was broken by the influence of power of time. And Prabhupada is speaking the same point here, that this parampara was broken. Bhagavad Gita was there, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन क्या टूट गया था, वो जो परंपरा था वो टूट गया था, और इसलिए वापस भगवान यहाँ पे बताया। तो ये हमेशा संप्रदाय विनाय मंत्र तंत्र निष्फला, है ना। संप्रदाय के बिना जो भी हम मंत्र करते हैं उसका कुछ फायदा होता नहीं, ये यहाँ पे बताया। भगवद गीता तो एज इट इज था, सुनो। और इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस सेम नॉलेज। ओके, नेक्स्ट पर्सन, थर्ड श्लोक। पढ़िए, हरि बोल, आवाज आ रहा है? हेलो, Yes, Prabhuji, we can hear. नेक्स्ट संतोष बाबा। Yes, Prabhu. Kalindi Mohan Prabhu ji भी थे, but he is. आ गए क्या? आया हूँ। हाँ. Kalindi Mohan Prabhu, you want to read? Are you there? आप पढ़ो। Okay, Prabhu. सैवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्. Translation. That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend, and can therefore understand the transcendental mystery of this science. Purport. There are two classes of men, namely the devotee and the demon. The Lord selected Arjuna as the recipient of this great science owing to his being a devotee of the Lord. But for the demon, it is not possible to understand this great mysterious science. There are a number of editions of this book of knowledge,
Some of them have commentaries by the devotees, and some of them have commentaries by the demons. Commentation by the devotees is real, whereas that of the demons is useless. Arjuna accepts Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and any commentary on the Gita following in the footsteps of Arjuna is real devotional service to the cause of this great science. The demonic, however, do not accept Lord Krishna as he is. Instead, they concoct something about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna's instructions. Here is a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic succession from Arjuna and thus be benefited by this great science of Srimad Bhagavad Gita. Simple, because he is a devotee. This knowledge, even though this knowledge was present, ऐसा नहीं कि present नहीं था, but because the parampara of devotion was lost, therefore nobody could understand. I have not spoken to anyone. In here, Rahasyam, because Arjuna will directly understand Bhakti on Krishna. So therefore you see here, Bhagavad Gita means direct devotional service to Krishna. If you can understand that by reading Bhagavad Gita you are not becoming the devotee of Krishna, it means your endeavor is lost. Therefore, the devotee of Krishna only can tell the real meaning of Bhagavad Gita. And only when he tells, and when innocent people understand, he will become the devotee of Krishna. Okay. They will become the devotee of Krishna when they are open-hearted, innocent. Because only Krishna Bhakta can tell the real meaning of Bhagavad Gita. And he can only release the real meaning of Bhagavad Gita. Like if you see, how many of you know the glories of chapter 3rd? कितने लोगों को याद है? पक्का? उसकी वो जो डिवोटीज है क्या करते हैं? कृष्ण भगवान के सामने भगवद गीता का 3रा चैप्टर सेट करके जितने भी आत्मा नरक में है उनको मुक्त करने के लिए प्लान करते हैं, क्योंकि वो डिवोटी ऑफ कृष्ण है. उसको पता है कि हर एक आत्मा भगवान का भक्त भूल गया है. इतना कंपैशन और वो कुछ भी कर सकते हैं. इतना बड़ा साहस कोई कर सकता है क्या कि जितने भी लोग नरक में उनको मुक्त करना है? ऐसे डिजायर भी नहीं आती लोगों के अंदर. छोड़ दो, इसने हमें गलत किया, इसको मरने दो. हम ऐसा बोलते हैं, इसने पाप किया ना, इसको छोड़ दे, इसको let him suffer in the nightmare. But the devotee, he doesn't want that. I also told you the story of Janak Maharaj. No. बताया था क्या मैंने? नहीं. Last time I think I told the story of Janak. Then when he was coming, आपने बताया था प्रभु. when he just came near Narakloka, so many people in the Narakloka, they were feeling relief from some misery. So when Janak was leaving, they said, don't go, don't. Why? Because of the air coming from your body, you are feeling relief. Then he remained there and he chanted the mantras to relieve all the people from Narakloka. All the people get relieved. And then Yamaraj comes in. He says, because of you, all people are getting relieved. But he asked Baba, why I am coming to the door of Naraka? What I have done? He said, because you took little bit land. You know, तो दो खेती के बीच में एक बॉर्डर होती है, उसको क्या बोलते हैं? What is? हाँ? अलग अलग शब्द होता है. तो कुछ मीटर, कुछ फुट आपने दूसरे के खेत में लिया था, तो इसीलिए आपको you have to come to the doors of Naraka. So how much we should careful to not take anybody's property.
Janak also has to go there. But of course, Krishna has a different plan to take Janak there. He wanted to show the glories of the devotional service. That all the people in the Naraka at that time got relieved because of the prayer by. So that is the power of the devotee of Krishna. And Lord Vishnu also, when this devotee, he was chanting the Bhagavad Gita chapter 3rd for relieving all the people, he sent his servant to the Yamlok and told Yamraj to release all the people. Yamraj never asked why. Vishnu said, release, means release. When Vishnu says release all the people, nobody can question. So then Yamraj comes to the Vishnu Loka and he glorifies Lord Vishnu. So that is the power of one devotee. He can remove, take all the people, Krishna becomes happy. So that is the glory of devotion. Who can tell this? One who is a devotee of Krishna. He becomes very happy if somebody chants the glories of Krishna. He is always want that the people's suffering should be finished. The sinful mentality should be finished. And therefore he is always planning. I was going in that. I was coming from Jagannath Yatra. So a small girl, I think she was in 7th standard, she gave me a lot of pressure. Her father told, give to Prabhu. She was distributing to all the brahmacharis and devotees. Prasad for Jagannath. So I took it. And I was coming in the vehicle to temple. Beggars came. One beggar came. I gave him prasad. He said, और एक दो मेरे बच्चे के लिए ले रहे तू दूसरा ले तीसरा बेगर आया उसको दिया. I had some 10 laddus Rajgira, big chicky this much. 10 beggars came. I said, प्रभु जी सब बांट रहे हैं बांट हमें करना है क्या खाने दो उनको वो खाएंगे तो वो भगवान के धाम चले जाए. जगन्नाथ का इच्छा था कि उनको ये उनका प्रसाद दिया जाए. तो सब 10 बेगर ऐसे खुश होकर खा रहे मेरे सामने. वाह जगन्नाथ क्या वैल्यू है. और खुशी से उसको खा रहे हैं. He will be relieved from that body. Even if you give him 1 lakh rupee, 10 lakh rupee to the beggar, his mentality will not go out. But we are taking Jagannath Prasad, his mentality of becoming beggar will go out. Because of his previous karma, he is suffering in this body of begging. Even if you give money, clothes, he will become beggar again. Because he is destined to become beggar in this life. But because he is taking the Jagannath Prasad, next life, he will receive it. Now only start. Because they are such a happiness, they are eating the Jagannath. So sometimes some people say, अरे कुछ लोग तो मंदिर में क्यों खाने के लिए आए. अरे आने दो ना तुम्हारे बाप का कुछ जा रहा है क्या भगवान जगन्नाथ का जा रहा है तुमको क्या हाँ खाने दो ना उनको आपको क्या करना है. तो जगन्नाथ का खा रहे देने वाले वही आप पैसा ला रहे हो क्या आपको लग रहा है लेकिन भगवान दे रहे. कोई बोलता है कुछ लोग आके लेक्चर में सोने देना भगवान के सामने से आपको प्रॉब्लम क्या है. हाँ अगर वो सुनेंगे तो अच्छा है लेकिन क्रिटिसाइज मत करो. डोंट क्रिटिसाइज. They are sleeping in the temple in front of Krishna. Child भगवान के सामने अपने माँ बाप के सामने बच्चा सो जाए तो प्रॉब्लम नहीं करना. ठीक है सो रहे मेरे सामने सो रहा है ना कोई प्रॉब्लम. तो always encourage. Don't unnecessarily criticize people. Yes, you should lovingly tell कितना दूर आया हो सुन लो लेक्चर भगवान के बारे में सुन लो. ठीक है सुन ले. प्रसाद खाने आया ना तो कभी कभी सुन लो ठीक है. लेकिन हमें लोगों को एक स्टेप भगवान के पास है. कितना 1 स्टेप. कुछ लोग तो बाहर के बाहर ही फूड डेवलप पे खिचड़ी खा के जाते हैं. मैं उनको बोलूंगा बहुत फॉर्चुनेट आदमी. मनुष्य नाम लक्षशु नॉट सहस्त्र. इन पुणे में कितना पॉपुलेशन है कितने लोग खिचड़ी खाने आ रहे बताओ आ रहे कैसे नहीं आ रहे. प्रभुपाद ने बोला कि विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द टेम्पल नोबडी शुड बी हंग्री. हम तो उसका कर ही नहीं रहे केवल मंदिर में बांट. प्रभुपाद ने बोला 10 किलोमीटर एवरी डे. Therefore, we need so many temples. Every 5 kilometers, we should have a small temple where from morning 4:30 to 9 o'clock programs are going on. कोई सुबह आ रहा है कोई शाम को आ रहा है. ऐसा नहीं कि कोई मंगलवार को नहीं आ रहा है मतलब वो मूर्ख. शाम को आ रहा है दिन में आ रहा है. अरे भगवान विष्णु के मंदिर में जाने का महिमा क्या है आपको पता है. इसलिए लोगों को शास्त्र पढ़ाना चाहिए.
ऐसा नहीं कि जो 4:30 मंगलाती ना है वो सब फॉलन है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। दोपहर में भी आ रहा है, आरती अटेंड कर रहा है, शाम को आ रहा है। लेडीज स्पेशली दे कैन नॉट कम इन द मॉर्निंग, उनको बच्चों का सेवा है, बूढ़ों का सेवा है, कुछ जिसके बच्चे नहीं उसको सेवा ही नहीं, जिसके माँ बाप नहीं उसका सेवा नहीं, फिर क्या पाए, है ना। उसको माँ बाप का सेवा है, बच्चे का सेवा है, उनको खाना खिलाना उनको करना चाहिए। लेडीज ऑफिस सब हो गया, बच्चे स्कूल गए, बूढ़ों को खाना वगैरह, गाय रही तो गाय को खाना हो गया, फिर उनका प्रोग्राम चलो तो 10 बजे मंदिर में जाएंगे, चैंटिंग करेंगे भगवान का नाम, है ना। अभी किसी के पास गाय ही नहीं है, बूढ़े माँ बाप ही नहीं, तो क्या सेवा है, बेचारे का धर्म पता है ना। इसे एक विलेज पिचिंग में मैं कर रहा हूँ, तो विलेज में मैंने सबको बोला सुबह कौन आएगा, छोटे बच्चे, वानप्रस्थ, यंग जो मैरिड लोग हैं उनको उनका काम करना है, और सब बाद जब उनको 10 बजे समय मिला 10 बजे आओ, और 8 बजे सबको आना है, अपना अपना प्रसाद खाओ, गाय का सेवा करो, बूढ़े वगैरह 8 से लेकर 9 बजे तक कथा सुनो, प्रसाद वगैरह कुछ नहीं, वो अपने अपने घर खाता फिर चले जाए, कथा सुनना चाहिए। ये विलेज का कल्चर, किसका कल्चर है। हमको गाय चाहिए कि नहीं, गाय से प्रेम करो, लेकिन गाय पालेंगे ऊपर, जो पाल रहा है उसको एनकरेज तो करना चाहिए हमें, है ना। भगवान का नाम क्या है, गो ब्राह्मण हिता है, पहले गाय है, क्या है। सो वी शुड नो व्हाट इज टू प्रीचिंग, व्हाट इज नॉट प्रीचिंग, नॉट कंफ्यूज द पीपल। एटलीस्ट कुछ लोग सेवा कर रहे गाय का, तो उनको नहीं बोला रहे गाय छोड़ के मॉर्निंग प्रोग्राम का, तो ठीक है तुम गाय का पालन करना दे, कृष्ण भगवान गाय का पालन क्यों कर रहे सुबह सुबह, कर रहे क्या? तो उसके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम अलग होता है, उसके लिए इवनिंग प्रोग्राम होता है। कोई बूढ़ा डिवोटी उठ नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं कि उसको सर्कस करके उठना है, ठीक है उठो तुम 4 बजे या 6 बजे, जो भी है, फिर मंदिर में आके दिन भर चैंटिंग करते करेगा, उसको कुछ काम नहीं। हाँ, जो बच्चे हैं उनको सुबह उठना जरूरी है, ब्रह्मचारी, जो बच्चे छोटे हैं 8 ईयर से लेके 18, उनको कंपल्सरी हो, जो लड़कियां हैं उनको कंपल्सरी हो, जो माता है उनको उठ के भी बच्चों का करना पड़ेगा, घर का काम करना पड़ेगा, समझ गया। तो हमें लोगों को प्रॉपर गाइड करके एनकरेज करना चाहिए। भगवान विष्णु की महिमा अनंत है, अनंत है। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ने वाला है? प्रभु जी। वीडियो सडनली ऑफ हो गए। ठीक है, घर का काम प्रभु जी, करें। हाँ, पढ़ो। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। Arjuna said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instruct this science to him? Purport by his divine grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Arjun is an accepted devotee of the Lord. So how can he not believe Krishna's words? The fact is that Arjun is not inquiring for himself, but for those who do not believe in the Supreme Personality of Godhead, or for the demons who do not like the idea that Krishna should be accepted as the Supreme Personality of Godhead. For them only, Arjuna inquires on this point, as if he were himself not aware of the personality of Godhead or Krishna. As it will be evident from the 10th chapter, Arjun knew perfectly well that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the fountainhead of everything, and the last word in transcendence. Of course, Krishna also appeared as the son of Devaki on this earth. How Krishna remained the same Supreme Personality of Godhead, the eternal original person, is very difficult for an ordinary man to understand. Therefore, to clarify this point, Arjun put this question before Krishna so that he himself could speak up authoritatively. That Krishna is the supreme authority is accepted by the whole world, not only at present, but for time immemorial. And the demons also reject him. Anyway, since Krishna is the authority accepted by all, Arjun put this question before him in order that Krishna would describe himself without being depicted by the demons, who also always try to distort him in a way understandable to the demons and their followers. It is necessary that everyone, for his own interest, know the science of Krishna. Therefore, when Krishna himself speaks about himself, it is auspicious for all the worlds.
To the demons, such explanations by Krishna himself may appear to be strange because the demons always study Krishna from their own standpoint. But those who are devotees heartily welcome the statements of Krishna when they are spoken by Krishna himself. The devotees will always worship such authoritative statements of Krishna because they are always eager to know more and more about him. The atheists who consider Krishna an ordinary man may in this way come to know that Krishna is superhuman, that he is Satchidananda Vigraha, the eternal form of bliss and knowledge, that he is transcendental, and that he is above the dominations of the modes of material nature and above the influence of time and space. A devotee of Krishna, like Arjun, is undoubtedly above any misunderstanding of the transcendental position of Krishna. Arjuna's putting this question before the Lord is simply an attempt by the devotee to defy the atheistic attitude of persons who consider Krishna to be an ordinary human being, subject to the modes of material nature. So this Bhagavad Gita, Sri Prabhupada has offered to Srila Bhakti Vidyabhushan. So the same commentary is given by Bhakti Vidyabhushan. Prabhupada has expanded on it. Bhakti Vidyabhushan says same thing. Arjuna may ask, how Arjuna knows everything about Krishna, but the people don't know. Therefore, he is asking. If you see give attention to the sloka. Arjuna, what question is asking? Bhavatah. Sanskrit Bhavata means aap. It is respect, not tum. Bhavatah janma aparam. आपका जन्म अपरम मतलब अभी अभी हुआ. विवस्वतः मतलब विवस्वान. जन्म परम वो तो बहुत पहले जन्म हुआ था. तो अतः इसलिए तुम आदो एतत् प्रोक्तवान. आपने आदो मतलब पहले सनगाड़ को ये कैसे बताया था. इति कथम विजानीयम्. ये मैं कैसे समझ सकता हूँ. सेम भगवद गीता श्लोक को मैंने सेंटेंस बनाया. आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं जो बोला. सिंपल. हाँ. Yes, sir. Yes, भगवतः Prabhuji. जन्म अपरम. आपका जन्म अभी अभी हुआ है. विवस्वत जन्म परम बहुत पहले हुआ है. अतः इसलिए therefore त्वम आपने आदो मतलब पहले. आदो अंत्य च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते थे. आदो पहले ये ज्ञान प्रोक्तवान बोला. किसको. विवस्वान. इति ये कथम कैसे विजानीय मैं कैसे समझ. समझ गया. क्लियर. आपको तो समझ गया ना. इतना सिंपल बोला है भगवदगीता के इस संधि विच्छेद में. और ये जान गया तो आपको आज पढ़ने की जरूरत. प्रभुपाद चाहते कि सबको भगवदगीता याद हो जाए. और ऐसे नहीं कैसे लॉ जैसे कोट करें कट कट कट. ऐसा नहीं कि याद किया तो मतलब स्टार्टिंग से बोलना पड़ेगा और धर्म क्षेत्र से लेके एंड तक. अरे भाई सपोज मैं प्रभुपाद ने आपको पूछा, किसी ने पूछा बताओ कृष्ण भगवान ने कहा गीता में बोला वो सुप्रीम है. ठीक है वापस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आप समझ लो कहाँ पे श्लोक. वैसे नहीं आपको तुरंत बोलना पड़ेगा. हम सर्वस्व मत्ता सर्वपते इति मत्वा भजते मां भूदा भाव परस्परम. कट. मया दीक्षण प्रकृति सुयते चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय परम जगत विप्र. जगत विपर्यते परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादि देवमजं विभुम आहुतारुष सर्वे देव श्री नारद तथा असुतो देवलोक स्वयं च ब्रवीषि में. अर्जुन उवाच. 10वें अध्याय. तो ये ऐसे भी श्लोक हमें याद आना चाहिए थीम वाइज. तो इसलिए रिसाइटेशन जरूरी. ऐसा मत समझने कि प्रभुपाद नहीं चाहते. प्रभुपाद चाहते थे. ऑफकोर्स अभी आपको सबको भगवदगीता का एसेंस पता है. ऐसा नहीं कि एसेंस जाने के पहले ये श्लोक याद करो. एसेंस पता है. अभी हमको डिटेल में जाना है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट श्लोक श्री भगवान उवाच. Yes, sir. 7. श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. Translation. एक मिनट. बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. ट्रांसलेशन देखना मत. तो भगवान क्या बोलते. हे परंतप अर्जुन. परंतप मतलब
खाली शूरवीर, हे परंतप अर्जुन, मैं तव च मतलब एंड, मैं च तव, मैं और तुम, हम दोनों के बहुनी बहुत जन्मानी व्यतीतानी हो चुके हैं। समझ रहे हैं ना? हे परंतप अर्जुन, मैं मतलब मेरे और तव और तेरे, आप तुम्हारे दोनों के बहुनी जन्मानी हो चुके हैं। तानी सर्वानी अहम वेद, सभी को मैं जानता हूं। वेद मतलब जानना। तुम न वेद था, तुम नहीं जानते। समझ रहे हैं आपको? कितने लोगों को समझ गया? मैंने जो बोला समझ Yes, गया? Prabhuji. आपको अर्थ देखने की जरूरत नहीं। अहम वेद, मैं जानता नहीं, तुम न वेद, तुम नहीं जानते। ठीक है, अभी आगे पढ़ो। ट्रांसलेशन और परपट दोनों। Yes. The personality of Godhead said, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot. O subduer of the enemy. Purport. In the Brahma Samhita 5.33, we have information of many incarnations of the Lord. It is stated there, Advaitam Achyutam Anadi Ananta Rupam Adyam Puranam Purusam Navayovanam Cha Vedesu Durlabam Adurlabam Atma Bhakto Govindam Adi Purusam Tamaham Bhajami. I worship the Supreme Personality of Godhead Govinda, Krishna, who is original person, absolute, infallible, without beginning. Although expanded into unlimited forms, he is still the same original, the oldest, and the person always appearing as a fresh youth. Such eternal, blissful, all-knowing forms of the Lord are usually not understood by even the best Vedic scholars, but they are always manifest to pure, unalloyed devotees. It is also stated in Brahma Samhita 5.39, Ramadi Murti Sukala Niyamena Tishtan नानावतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. I worship the Supreme Personality of Godhead Govinda, Krishna, who is always situated in various incarnations such as Rama, Narsimha, and many sub-incarnations as well, but who is the original personality of Godhead, known as Krishna, and who incarnates personally also. In the Vedas also, it is said that the Lord, although one without a second, manifests himself in innumerable forms. He is like the Vaidurya stone, which changes color yet still remains one. All those multiforms are understood by the pure, unalloyed devotees, but not by a simple study of Vedas. Vedesu Durlabam Adurlabam Atma Bhakto. Devotees like Arjuna are constant companions of the Lord, and whenever the Lord incarnates, the associate devotees also incarnate in order to serve the Lord in different capacities. Arjuna is one of these devotees, and in this verse, it is understood that some millions of years ago, when Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita to the sun god Vibhaswan, Arjuna in a different capacity was also present. But the difference between the Lord and Arjuna is that the Lord remembered the incident, whereas Arjuna could not remember. That is the difference between the part and parcel living entity and the Supreme Lord. Although Arjuna is addressed herein as the mighty hero who could subdue the enemies, he is unable to recall what had happened in his various past births. Therefore, a living entity, however great he may be in the material estimation, can never equal the Supreme Lord. Anyone who is a constant companion of the Lord is certainly a liberated person, but he cannot be equal to the Lord. The Lord is described in the Brahma Samhita as infallible, Achyuta, which means that he never forgets himself, even though he is in material contact. Therefore, the Lord and the living entity can never be equal in all respects, even if the living entity is as liberated as Arjuna. Although Arjuna is a devotee of the Lord, he sometimes forgets the nature of the Lord, but by the divine grace of a devotee, can at once understand the infallible condition of the Lord, whereas a non-devotee or a demon cannot understand this transcendental nature. Consequently, these descriptions in the Gita cannot be understood by demonic brains. Krishna remembered acts which were performed by him millions of years before, but Arjuna could not, despite the fact that both Krishna and Arjuna are eternal in nature.
We may also note herein that a living entity forgets everything due to his change of body, but the Lord remembers because he does not change his Satchidananda body. He is Advaita, which means there is no distinction between his body and himself. Everything in relation to him is spirit, whereas the conditioned soul is different from his material body. And because the Lord's body and self are identical, his position is always different from that of the ordinary living entity, even when he descends to the material platform. The demons cannot adjust themselves to this transcendental nature of the Lord, which the Lord himself explains in the following verse. So Baldev Devotion has said the same thing. देखिए क्या बोलते हैं सेम. अभी यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. भगवान ने बोला है कि उनके बहुत सारे जन्म हैं. हाँ? Lord is saying that he has. हाँ ठीक है. Krishna says here that he has many births. If Krishna is saying that he has many births, it means he is born. ना? भगवान का जन्म होता है क्या? हमने तो बोला आजो पिसन अव्यात्म, उनका जन्म नहीं होता. तो यहाँ पे कैसे पॉसिबल? कि अगर आपको किसी को कुछ प्रसाद लेना तो आप ले सकते हो, वीडियो ऑफ करने की जरूरत नहीं. मैंने ऐसा छूट दिया, भूख लगा तो खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. कुछ लोग वीडियो ऑफ करके खा रहे, मुझे पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो बताइए, तो भगवान का जन्म होता है क्या? तो सेम चीज प्रभुपाद ने बोला है कि लॉर्ड्स बर्थ मीन्स हियर he has instructed this knowledge of Bhagavad Gita to Vivaswan in his different avatar. The Lord is telling not here that he has he's being born. He said that I have passed through many births. I have passed through many births. I'm not born in a birth. I have passed through many births through my different avatar. And you also have passed. But currently I have covered you by my Yoga Maya for the Leela, for the purpose of Leela. That's what is told by Baldev Devotion. And same thing is if you see elaborated by Prabhupada. अवतार के बारे में वर्णन आया कि नहीं है ना. अवतार के बारे में वर्णन आया. इसका अर्थ है कि भगवान का जन्म नहीं होता है, उनका अवतार होता है. क्या होता है? अवतार. नेवर जन्म, हमेशा क्या होता है? अवतार. क्लियर हो गया? अगर आपको किसी ने प्रश्न पूछा, देखो भगवान के भी जन्म हो रहा है, जस्ट जन्म हो, लेकिन जन्म तो हो रहे ना. जैसे भगवान के अनेक जन्म हो रहे, हमारे भी जन्म हो रहे, तो हमारा भगवान एक है. वी आर बोथ सेम. बट नो, Lord is not being born. He's passing through different births through the different avatar. Clear? This is clear? Yes. So now next shloka. Hare Krishna, Prabhuji Dhanavad. Bhagavad Gita, shloka 4.6. Ajo api san न व्यव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाधिम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. Perfect. One minute. भगवान बोलते अहम, मैं, अजह, अव्यय, आत्मा. कैसा आत्मा हूं मैं कैसा हूं? अजह, अनबॉर्न, अव्यय आत्मा. देन अपि सन, भूतानाम ईश्वरः अपि सन, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्म माया संभवामि. आत्म, I still appear in every million. आत्म, मेन सेंटेंस क्या है? आत्म माया संभवामि. मेरी योग शक्ति के बल के द्वारा मैं बार बार अवतार लेता हूँ. भूतानाम ईश्वरः अपि सन स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय. स्वाम प्रकृतिम, जो प्रकृति का मैं ओनर हूं.
Swam Prakritim Adhishtaya Atmamaya Sambhavami. I appear in every million. Atmamaya. Bhutanam Ishwaraha. What I am? Lord of all the entities. Bhutanam Ishwaraha. Ajah Abhay Atma. ये सब होने के बावजूद भी स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्माया अहम संभवती। तो मेरी प्रकृति के अंदर में क्या करता हूँ? मेरी योग माया से आविर्भाव करता हूँ। भले मैं क्या हूँ? अव्यय हूँ, अज हूँ, अजन्मा हूँ। जन्म अजह, ज मतलब जन्म, अज मतलब नहीं जन्म। तो ऐसे भगवान यहाँ बोलते हैं। अभी आप पढ़िए। इसके हर एक के तात्पर्य बहुत अच्छे बड़े बड़े हैं। केयरफुली आप काम करो माता जी। 10 लाइन के बाद एक ब्रेक लेना ताकि उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो पूरा ऐसा आदमी मोनोटोन में जाएगा। ठीक है, 10 लाइन पढ़। Yes, Maharaj. Purport. The Lord had spoken about the peculiarity of his birth. Although he may appear like an ordinary person, he remembers everything of his many past births, whereas a common man cannot remember what he has done even a few hours before. If someone is asked what he did exactly at the same time one day earlier, it will be very difficult for a common man to answer immediately. He will surely have to dredge his memory to recall what he was doing exactly at the same time one day before. And yet, men often dare claim to be God or Krishna. One should not be misled by such meaningless claims. Then again, the Lord explains his Prakriti or his form. Prakriti means nature as well as Swarupa or one's own form. ठीक है. So what here Prabhupada says, my past birth, whereas a common man cannot remember what he has done. So this indicates the Lord's omniscient nature, that he is able to tell everything about his past. Okay, बढ़िया. The Lord says that he appears in his own body. He does not change his body as the common living entity. As the common living entity changes from one body to another. The conditioned soul may have one kind of body in the present birth, but he has a different body in the next birth. In the material world, the living entity has no fixed body but transmigrates from one body to another. The Lord, however, does not do so. Whenever he appears, he does so in the same original body by his eternal potency. In other words, Krishna appears in this material world in his original eternal form with two hands holding a flute. He appears exactly in his external body, uncontaminated by this material world. Although he appears in the same transcendental body and is Lord of the universe, it still appears that he takes his birth like an ordinary living entity. एक मिनट. So now what is telling? God is appearing in his same body. He is not changing the body. There is no difference between his body and his soul. Both are same. Swarupa, not Pararupa. Swarupa. He is never changing his body. He is simply appearing and disappearing. So every word is very important here. Next one. Yes. And although his body does not deteriorate like a material body, it still appears that Lord Krishna grows from childhood to boyhood and from boyhood to youth. But astonishingly enough, he never ages beyond youth. At the time of the Battle of Kurukshetra, he had many grandchildren at home, or in other words, he had sufficiently aged by material calculations. Still, he looked just like a young man, 20 or 25 years old. We never see a picture of Krishna in old age because he never grows old like us. Although he is the oldest person in the whole creation, past, present, and future. Neither his body or his intelligence ever deteriorates or changes. Therefore, it is clear that in spite of his being in the material world, he is the same unborn, eternal form of bliss and knowledge. Knowledge, changeless in his transcendental body and intelligence. Should I continue, Prabhuji? Continue.
Factually, his appearance and disappearance are like the sun's rising, moving before us, and then disappearing from our eyesight. When the sun is out of sight, we think that the sun is set. And when the sun is before our eyes, we think that the sun is on the horizon. Actually, the sun is always in its fixed position. But owing to our defective, insufficient senses, we calculate the appearance and disappearance of the sun in the sky. And because Lord Krishna, appearance and disappearance are completely different from that of any ordinary common living entity, it is evident that he is eternal blissful knowledge by his internal potency, and he is never contaminated by the material nature. Continue. The Vedas also confirm that the Supreme Personality of Godhead is unborn, yet he still appears to take his birth in multi-manifestations. The Vedic supplementary literatures also confirm that even though the Lord appears to be taking his birth, he is still without change of the body. In the Bhagavatam, he appears before his mother as a Narayana, with 4 hands and the decorations of the 6 kinds of full opulences. His appearance in his original eternal form is his causeless mercy, bestowed upon the living entities so that they can concentrate on the Supreme Lord as he is, and not on the mental concoctions or imaginations which the impersonalist wrongly thinks the Lord forms to be. The word Maya or Atma Maya refers to the Lord's causeless mercy according to the Vishwakosa dictionary. The Lord is conscious of all of his previous appearances and disappearances, but a common living entity forgets everything about his past body as soon as he gets another body. He is the Lord of all living entities because he performs wonderful and the superhuman activities while he is on this earth. Therefore, the Lord is always the same, absolute truth, and is without differentiation between his form and self, or between his quality and body. A question may now be raised as to why the Lord appears and disappears in this world. This is explained in the next verse. Hare Krishna. Thank you, Prabhupada. So Prabhupada has very systematically taken the Acharya's commentary, very systematic. So now he will tell why he appears and disappears. How he disappears in his Swarupa, that is very clearly told now. Okay, that is very clear now. He is not taking birth as a normal person, but same roop is. Therefore, it is called as appear and disappear. Avatar, our avataran, Tirobhav. Avirbhav, not Janma Mrityu. Not Janma Mrityu. So that is very Prabhupada taking from Baldev Vidya Bhushan only. They are giving the exam. Therefore, Krishna is always compared to moon. Like moon also disappears in a kala. So Krishna also is displaying the kala. Now why he appears? 7th verse. Very famous these 2 verses. 7 and 8. Everybody should be at least by hearted. Yada yada ye dharmasya. जिसने महाभारत देखा उनको याद है. कौन है इसके बाद? Hare Krishna Prabhuji. 13 number. यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. एक मिनट. The word. एक मिनट. Yes, sir. तो क्या बताया यहाँ पे कृष्ण ने? हे भारत is name of the Arjuna. Coming in the dynasty of Bharat. हे भारत यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, जब जब भी धर्म की ग्लानि होती, होता क्या है? अधर्म से च अभ्युत्थानम भवति, अधर्म फैल जाता है. उस समय अहम मैं आत्मानम सुजामि, आत्मा बोला है, मतलब मैं खुद स्वरूप के साथ सुजामि अवतार करता हूँ. जन्मानी लिखा है, सुजामि लिखा. क्या लिखा?
सृजामी, जन्मानी नहीं, अभी पढ़िए। पढ़ सकते। Yes. The word Srijami is significant herein. Srijami cannot be used in the sense of creation because, according to the previous verse, there is no creation of the Lord's form or body, since all of the forms are eternally existent. Therefore, Srijami means that the Lord manifests himself as he is. Although the Lord appears on schedule, namely at the end of the Dwapar Yuga of the 28th millennium of the 7th Manu in one day of Brahma. He has no obligation to adhere to such rules and regulations because he is completely free to act in many ways at his will. He therefore appears by his own will whenever there is a predominance of irreligiosity and a disappearance of true religion. Principles of religion are laid down in the Vedas, and any discrepancy in the matter of properly executing the rules of the Vedas makes one irreligious. In the Bhagavatam, it is stated that such principles are the laws of the Lord. Only the Lord can manufacture a system of religion. The Vedas are also accepted as originally spoken by the Lord himself to Brahma from within his heart. Therefore, the principles of dharma or religion are the direct orders of the Supreme Personality of Godhead, dharmam tu sakshat bhagavad pranita. These principles are clearly indicated throughout the Bhagavad Gita. The purpose of the Vedas is to establish such principles under the order of the Supreme Lord, and Lord directly orders at the end of the Gita that the highest principle of religion is to surrender unto him only, and nothing more. The Vedic principles push one towards complete surrender unto him, and whenever such principles are disturbed by the demoniac, the Lord appears. Shall I continue? From the Bhagavatam, we understand that Lord Buddha is the incarnation of Krishna, who appeared when materialism was rampant and materialists were using the pretext of the authority of the Vedas. Although there are certain restrictive rules and regulations regarding animal sacrifice for particular purposes in the Vedas, people of demonic tendencies still took to animal sacrifice without reference to the Vedic principles. Lord Buddha appeared in order to stop this nonsense and to establish the Vedic principles of non-violence. Therefore, each and every avatar or incarnation of the Lord has a particular mission, and they are all described in the revealed scriptures. No one should be accepted as an avatar unless he is referred to by scriptures. It is not a fact that the Lord appears only on Indian soil. He can manifest himself anywhere and everywhere, and whenever he desires to appear. In each and every incarnation, he speaks as much about religion as can be understood by the particular people under their particular circumstances. But the mission is the same, to lead people to God consciousness and obedience to the principles of religion. Sometimes he descends personally, and sometimes he sends his bona fide representative in the form of his son or servant or himself in some disguised form. The principles of the Bhagavad Gita were spoken to Arjuna, and for that matter to other highly elevated persons, because he was highly advanced compared to ordinary persons in other parts of the world. 2 plus 2 equals 4 is a mathematical principle that is true in the beginners at arithmetic class and in the advanced class as well. Still, there are higher and lower mathematics. In all incarnations of the Lord, therefore, the same principles are taught, but they appear to be higher and lower in varied circumstances. The higher principles of religion begin with the acceptance of the 4 orders and 4 statuses of social life, as will be explained later. The whole purpose of the mission of incarnations
is to arouse Krishna consciousness everywhere. Such consciousness is manifest and non-manifest only under different circumstances. Hare Hare Krishna. They are talking about Buddha avatar, different avatars, how Lord is taking the different avatar for the purpose of maintaining everything. The whole purpose of mission is only what? To Krishna conscious, like Matsya, Kacha avatar. Why Krishna taking incarnation in the Matsya, animal species also? Because to inspire all the animals also. To inspire, it's called as Adbhuta Rasa. People are amazed to see, Hare, Matsya Bhagwan, Kacha Bhagwan, Varaha Bhagwan. So some people get impressed by some incarnation. Like one person, he came to join Krishna consciousness because I saw one photo on the book of Ishopanishad of Lord Vishnu. I like that photo. Therefore I came, by simply seeing the photo. So some people get attracted by Nrsimha form, some Vara form, some Kachap form. So therefore Krishna is so merciful that he is always there to attract people. Therefore he came in 5 forms, Panchatattva. Okay, somebody is not attracted by Krishna. Duryodhana is attracted by Balram. Of course, he will get mercy because he is attracted to Balram. So somewhere you have to be attracted, either Balram, Advaitacharya, Gadadhar, Srivas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu. Or some of his associates, anywhere you get connected, you will be attracted by them. You will get the mercy of Krishna. Next sloka. Paritrana, it's a famous. Where is it? 13, 14 now, is it 14, 15? Yes. परित्राणाय साधु परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. एक minute. So very simple sloka. Sadhunam paritranaya च दुष्कृताम विनाशाय, बुरे लोगों का संहार करने के लिए, धर्म संस्थापन अर्थाय च, और धर्म की स्थापना, अहम लिखा नहीं इसमें, युगे युगे संभवामि, मैं हर युग में क्या करता हूँ, आविर्भाव करता हूँ या अवतार. या पढ़िए. Translation: To deliver the pious. In previous verse, Atmanam Sujami. The phrase Atmanam Sujami is not that I make my body. Since the eternal nature of his body has been already established, so means what? My avatara will appear in the same body or different body. I keep appearing. There is no fixed period for me because there are innumerable incarnations of Lord. Now you read. To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. Purport: According to Bhagavad Gita, a sadhu, holy man, is a man in Krishna consciousness. A person may appear to be irreligious, but if he has the qualification of Krishna consciousness, wholly and fully, he is to be understood to be a sadhu. And Drishkritam applies to those who do not care for Krishna consciousness. Such miscreants or Druskritam are described as foolish and the lowest of mankind, even though they may be decorated with mundane education, whereas a person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as a sadhu, even though such a person may be either learned or not, may neither be learned nor well cultured. As far as the atheists are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with the demons Ravana and Kamsa. The Lord has many agents who are quite competent to vanquish demons, but the Lord especially descends to appease his unalloyed devotees, who are always harassed by the demonic. The demon harasses the devotee even though the latter may happen to be his king. Although Prahlad Maharaj was the son of Hiranyakashipu,
he was nonetheless persecuted by his father. Although Devaki, the mother of Krishna, was the sister of Kamsa, she and her husband Vasudev were persecuted only because Krishna was to be born of them. So Lord Krishna appeared primarily to deliver Devaki rather than kill Kamsa. But both were performed simultaneously. Therefore, it is said here that deliver the devotee and vanquish the demon miscreants. The Lord appears in different incarnations. Should I continue? In Chaitanya Charitamrita of Krishnadas Kaviraj, the following verse, Madhya Leela 20.263 to 264, summarizes these principles of incarnation. सृष्टि हेतु ये मूर्ति प्रपंच अवतारे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे मायातीत पर व्योमे सबर अवस्थान विषय अवतारी धरे अवतार नाम. The avatar or the incarnation of Godhead descends from the kingdom of God for material manifestation, and the particular form of the personality of Godhead who so descend is called incarnation or avatar. Such incarnations are situated in the spiritual world, the kingdom of God. When they descend to the material creation, they assume the name avatar. There are various kinds of avatar, such as Purusha avatar, Guna avatars, Lila avatars, Sakti Avish avatars, Manvantara avatars, and Yuga avatars, and all appearing on schedule all over the universe. But Lord Krishna is the primal Lord, the fountainhead of all avatars. Lord Sri Krishna descends for specific purpose of mitigating the anxiety of the pure devotees, who are very anxious to see him in his original Vrindavan pastimes. Therefore, the prime purpose of the Krishna avatar is to satisfy his unalloyed devotees. The Lord says that he incarnates himself in every millennium. This indicates that he incarnates also in the age of Kali. As stated in Srimad Bhagavatam, the incarnation in the age of Kali is Lord Chaitanya Mahaprabhu, who spread the worship of Krishna by the Sankirtan movement, the congregational chanting of the holy names, and spread Krishna consciousness throughout India. He predicted that this culture of Sankirtan would be broadcast all over the world, from town to town and village to village. Lord Chaitanya, as the incarnation of Krishna, the personality of Godhead, is described secretly but not directly in the confidential parts of the revealed scriptures, such as the Upanishads, Mahabharata, and Bhagavatam. The devotees of Lord Krishna are very much attracted by the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. This avatar of the Lord does not kill the miscreants but delivers them by his causeless mercy. One minute. So, now here, if you see, there is no need for Krishna to come, because his devotees can also by preaching do the adharma, remove the adharma. But no, because the devotees of Krishna, they are absorbed in Krishna. They are longing to see the form of Krishna. And therefore I appear to deliver them from this suffering by showing my attractive form directly. Also, I will kill the Ravana, Kamsa, who are very dangerous demons, who cannot be killed except by me. I also spread dharma by spreading pure bhakti. When people meditate on my pure form, deity form, then the dharma will spread. And nobody can do spreading of Vedic dharma. So specifically, 3 reasons I come. Therefore I come. So these are the secrets of Acharya. Told why Krishna comes. Because the Krishna, when Krishna will come in certain form, the deity form is very attractive. Like Narsingha Shaligram or Gopal Shaligram, Govardhan Shaligram. So attractive.
आप में से कितने लोगों ने, किसके घर में शालिग्राम है? किसी के घर में है? नहीं है? किसी ने देखा है कि शालिग्राम क्या होता है? पता है? नाम सुना है? कितने अट्रैक्टिव होते हैं। देखा है, देखा है। हाँ, मेरे एक स्टूडेंट के पास है, पूरा ऐसे गोपाल की आंखें बनाने में बिजी हो जाते हैं। उनका समय कब जाता है समझते हैं। गोपाल की शालिग्राम, नरसिंह देव की शालिग्राम, एंड शालिग्राम इज डायरेक्टली कृष्णा। उसका इंस्टॉलेशन करने की आवश्यकता नहीं। You might have seen many temples in South there. Now temple also Shaligram is there. Prabhupada said every Grihastha can have Shaligram. I have letters of Prabhupada because it is directly Krishna. कुछ इशू हुआ, ये लोग भगवान के सामने बोलो, उनके सामने गीता बोलो, उनके सामने भागवत बोलो, जो बड़बड़ करना है करो, डायरेक्ट भगवान के साथ, है ना। और उसका वर्शिप भी बहुत आसान हो, 15 मिनट में वर्शिप होता है। बस उसको गंगा जल, तुलसी जल और कुछ भोग लगा दिया, तो एलाबोरेट करना है, आके करो उनके लिए, है ना। मैंने रिसेंटली एक हमारे स्टूडेंट के शालिग्राम के लिए कुछ आंखें बनवाई, राधा कुंड से। मतलब ये ऐसा डीटी का चक्कर होता है कि आदमी को दूसरा कोई समझता ही नहीं, इसमें बिजी हो जाता है ना। तो ये ऐसी आंखें हैं, ये वही भगवान की आंखें राधा कुंड से मंगाई मैंने, तुलसी से बनी, है ना। शालिग्राम को मुझे दूसरा कुछ भौतिक मटेरियल चीज लगाना है, ऐसी आंखें। नरसिंह देव शालिग्राम की आंखें, तुलसी अभी इसको किसको पेंटिंग को देने वाला है, ये उनका तिलक, सब तुलसी का, क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है ना। ये उनका ऐसा उससे तुलसी से बना के अभी है। और इसको चिपकाने के लिए कोई ब्लू टैग वगैरह यूजलेस चीज यूज नहीं करवाना। शाम लगाओ, उसका नाम है शाम लगाओ, जो नाथ द्वारा से ओरिजिनल मोम होता है, जो वहां के पुजारी भगवान की आंखें लगाने, उसको बोलते हैं शाम लगाओ। शाम को लगाओ, तो उसको आंखें ऐसे, वो अगरू उसमें डाला जाए, अगरू और ब्लैक सुगंध आता है, प्योर छत्ता है ना, मधुमक्खी का छत्ता। तो एक प्लास्टिक वगैरह ये नहीं लगाना, ब्लू टैग वगैरह किससे बना है पता नहीं, है ना, पता होना चाहिए किससे बना है। तो ऐसा इसमें मैं इतना बिजी हो जाता हूँ कि भगवान को आके कैसे दिखेगी। हमारा फोकस कहाँ जा रहा है पूरा? भगवान, किसके ऊपर? भगवान के। आपको दिखाता हूँ, मेरे स्टूडेंट के पास जो शालिग्राम है, वो डेली मुझे मैसेज करता है ना। एक मिनट, I will show you. मैसेज है, वो संतोष वो है, वो उनके घर में शालिग्राम, और बेचारे पति पत्नी सेवा करते रहते, इतने एब्जॉर्ब्ड है उसके अंदर। फोटो में दिखाएंगे, दिख रहा है? 2 गोपाल की शालिग्राम है, और नीचे दूसरे चक्रा, सुदर्शन, नरसिंहा। अभी उनको क्या डेकोरेशन के लिए टाइम लग रहा था, बोला ठीक है तुलसी की आग लगा दो, तुलसी का तिलक लगाओ, तुलसी का मुंह लगाओ, बस फटाफट। बेचारे उनकी पत्नी करते थे, ये बेचारा भगवान को अभिषेक करके भाग जाता है, पत्नी बैंड बेचारा करते बैठते। क्या डेकोरेशन, क्या देखो पूरा आल्टर बनाया है, कितना डिवोशन उसके अंदर होता है ना। डिवोशन के साथ बेचारे खुश है, उसी के सामने गीता पढ़ो, उन्हीं को भोग लगाओ, क्या हो रहा है? शालिग्राम भगवान को भोग लगा रहा है वो, उनके सामने जो कुछ कर रहे हैं बैक टू गॉड तो ठीक से, बाकी के जीवन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, उसको इतना देखना नहीं चाहिए। हाँ, और भगवान को भक्तों से सेवा अच्छा लगता है, कर्मकांडी लोगों से अच्छा। भले कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो भगवान को भक्ति अच्छी लगती है। और कोई दूसरे कुल में है लेकिन वो भगवान की सेवा करने में तत्पर, तो भगवान को अच्छा लगता है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ ब्राह्मण मीन्स भक्त, तो हमें वो बनना ही पड़ेगा, अभी हम भगवान के नाम भक्त बनना ही पड़ेगा। ब्राह्मणिकल क्वालिटीज में क्या? भगवान को वर्शिप में आनंद, भगवान के उत्सव मनाने का विचार करता है कि आप भगवान को क्या भोग लगाएंगे, भगवान को क्या खिलाएंगे, भगवान के भक्त कैसे बढ़ाएंगे। ये ब्राह्मण का गुण, यजन याजन पठन पाठ, बस उसको मंत्र बोलेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। ठीक है, मंत्र नहीं आया लेकिन भगवान की सेवा करने का,
तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि सबकी जिसके घर में शालिग्राम है उसके घर में साधु को भी चाहते हैं प्रसाद ऐसा है, तो सबके घर में होता है। और स्त्री वैश्य तथा शूद्र सभी शालिग्राम की सेवा कर सकते हैं जब उनका क्या है, पंचरात्रि विधि में इनिशिएशन हो, मतलब किसी वैष्णव के श्रद्धा में वो पहुंच गए, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको भगवान क्या है पता है, फिर देयर कॉल। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? आवाज आ रही है क्या? मैंने मोबाइल इसको स्विच ऑफ किया है, जिसमें मैंने लगा। आ रही है। हाँ चलो ठीक है। तो भगवान का सुंदर फॉर्म कितना अट्रैक्टिव होता है, लोग उसी में खो जाते हैं। ऐसा फॉर्म, ऐसा instead of material form you are absorbed in Krishna's form. In the night you will dream the Krishna's form. Nothing they fighting so nice ना। हमें कुछ फालतू फालतू ड्रीम आते हैं, भगवान के ड्रीम आते कितना अच्छा। भगवान का ऐसा पेंटिंग करूँ क्या मैं, और वैसा होता है मनी वसेते स्वप्नी, जिसे आपकी कॉन्शियसनेस में क्या है ना वो ड्रीम में आता है। मतलब आप भगवान के नाम फिक्स होगी, भगवान देखेंगे अरे बेचारा अभी इतना प्लान करे तो इधर आके क्या सेवा करेगा, बुला उसको। भगवान रस राज, he want to enjoy rasa with every devotee। ये कैसा सेवा करेगा, मेरे पे गुस्सा होगा, ठीक है होने दो, मेरे को अच्छा लगता है। जैसे सत्यभामा भगवान को बहुत गुस्सा करती है, उससे जैसे जगदानंद पंडित भगवान पे बहुत गुस्सा करते, भगवान को बहुत अच्छा लगता, क्योंकि भगवान की भक्ति ये मैकेनिकल नहीं है, कॉर्पोरेट भक्ति नहीं है। भगवान कल में कहीं तो लेक्चर में किसको बोल रहा था, आप लोगों का लेक्चर हुआ नहीं था, भगवान कैसे इमोशनल है, कैसे इमोशनल। जब जगदानंद पंडित ने भगवान के लिए चंदन का तेल बनाया और शिव दामोदर ने बोला दे दो भगवान को लगाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु बोले जगह को समझता है क्या, मैं सन्यासी अगर चंदन का तेल लगा के घूमेंगे तो लोग बोलेंगे देखो सन्यासी चंदन का तेल लगा रहे, उसका सुगंध आएगा। इसको बोलना जगन्नाथ को दो, किसको दो, फिर स्वरूप दामोदर ने तेल वापस कर दिया, बोले जगन्नाथ को। तो दूसरे दिन महाप्रभु उसके सामने आए, बोले जगन्नाथ को तेल दिया क्या, तो जगदानंद ने पूरा तेल का मटका लाया भगवान के सामने फोड़ दिया, बोले कौन सा तेल, मेरे को पता ही नहीं कौन सा तेल, और रूम में आके रूम बंद करके बैठ गए। 3 दिन तक खाना नहीं खाया, महाप्रभु को टेंशन आया। फिर महाप्रभु उनके घर पे जाके उसको ठक ठक करके बोलते मुझे भूख लगा है, बना प्रसाद बना। तो 3 दिन भूखा आदमी उठ जाता है, बढ़िया भोग लगाता है, परचेसिंग करता है, इतना आइटम बनाता है, महाप्रभु को खिलाता है। फिर महाप्रभु खाने के पहले बोलते तू खा पहले बाद में मैं, बोले मैं पहले आप खा मैं बाद में खाता हूँ, बोले पक्का, हाँ बाद में। फिर महाप्रभु वहीं रुक जाते, बोलते तू खा, बोलते नहीं आप जाइए मैं खाता हूँ। फिर महाप्रभु अपने श्रवण गोविंद को बोलते इधर बैठ और मुझे बता कि वो खाया क्या, तब मैं जाके सोने वाला। फिर जगदानंद खाता है। तो भगवान को ऐसा सब करना पड़ता है, रस आस्वादन कौन सा आस्वादन नहीं है, रस आस्वादन। स्पिरिचुअल में भी ऐसा ही कॉन्टिन्यूस काम होता है, कोई ऐसा फिक्स शेड्यूल भगवान का होता है। जब गो पे इधर लेके चलो तो गो बोलिंग हो जाए, कृष्ण इज इमोशनल, भावना प्रधान, क्या है वो, भक्तों की भावना प्रधान। ठीक है, क्या प्रश्न आप? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बोला ना कि लाइक शालिग्राम शिला किस किस के घर में है, सो जस्ट वांटेड टू आस्क कि हम मतलब हर कोई शालिग्राम शिला रख सकता है क्या घर में अपने टेम्पल में? बिकॉज हमने सुना है लाइक इन जनरल लोग कहते हैं कि लाइक वी शुड नॉट कीप शालिग्राम इन आवर टेम्पल और इन आवर हाउस, बिकॉज उसके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम होते हैं एंड नॉट एवरीवन कैन कीप, वो सिर्फ टेम्पल में वहीं पे हो सकते हैं। किसने बता, नाम बताओ, किसने नाम मत बताओ। नहीं नहीं, नॉट इन डिवोटीज, लाइक मैंने प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन भेजू क्या, आपको भेजता हूँ। प्रभुपाद बोले एवरी व्यवस्था शुड हैव शालिग्राम। आपके पास डिवोशन है ना, आप 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, कितने लोगों के पास शालिग्राम होता है। बाहर जाके देखो यूपी बिहार में कुछ नॉन ओनियन गार्लिक भी खा रहा है फिर भी शालिग्राम रखता है, समझ गया। तो आप 4 नियमों का पालन कर रहे हो ना, Yes, और हर दिन भगवान को भोग लगा रहे हो, तो फिर yes. प्रॉब्लम क्या है? हाँ, और उनको क्या चाहिए, एक गंगा जल का बॉटल ला के रखो, पहले पानी में एक बॉटल एक बूंद गंगा जल डालो ग्लास में, उसके ऊपर पानी डालो, पानी में गंगा जल कभी डालना है। आप जब अभी जैसे आचमन करते हैं, हमने आचमन कप में नॉर्मल पानी लेके उसमें एक बूंद नहीं डालने का, पहले एक आचमन पात्र में एक बूंद गंगा जल डालना, उसके ऊपर उसमें जल डालना,
क्योंकि तुम गंगा जल में कुछ भी डाल सकते हो, समझ गए? वो गंगा जल है, गंगा जल का महिमा है। हम गंगा जल में पानी डालें, पानी में गंगा जल नहीं डालें, पानी बड़ा वैल्यू नहीं, गंगा जल है बस। और सबसे इम्पोर्टेंट तुलसी, शालिग्राम के नीचे ऊपर हमेशा क्या होनी चाहिए? तुलसी, बस। और आपने कुछ भी लड्डू बना के रखे हैं, सपोज तुमने 100 लड्डू बना के रखे, सेम लड्डू डेली ऑफर। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप हर दिन भगवान को भोग लगा लगाओ, या कुछ दिन आपके पास नहीं है, नहीं बनाया तो लड्डू लगाओ। और कहीं बाहर गए तो एक डब्बे में लेके जाओगे, इतने छोटे शालिग्राम डब्बे में लेके जाओ कहीं पे शांति से। और केवल जो चीजों का 4 दिन का होता है उसमें उनको कुछ नहीं करना चाहिए, कुकिंग भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। उस समय में किसी को बोलना चाहिए, या आपने जो ऑलरेडी बना के लड्डू रखे उसको ऑफर करने को बोलो किसी व्यक्ति को। एग्जैक्टली 2 लोग चाहिए है ना? फिर है तो फिर क्या हो जाएगा? पहले क्या होता था, लोगों के घर बड़े होते थे, जब किसी का स्त्री का मासिक धर्म आता था वो ऐसे, अभी हमारे घर में मुझे पता है, मेरी माँ एक रूम में जाके बैठ जाती थी, उसको उधर जा ही नहीं सकता, बराबर है कि नहीं? महाराष्ट्र में वो एक रूम में जाएंगे, उधर कोई जाता नहीं, तो फिर उसका प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आपके घर में बहुत कम है तो इश्यू होता है। लेकिन इवन शास्त्र में प्रभुपाद ने ऐसा कहा, अगर स्त्री का मासिक धर्म भी रहा और आपके घर में गौ निता है, भगवान की सेवा करने के लिए कोई नहीं तो भी नहा के करो तुम, ऐसा आपद धर्म है। क्या है? आपद धर्म, इमरजेंसी। क्या है? इमरजेंसी, बट एटलीस्ट 2 people should be there. Then 1 person is like that, sick other person. क्लियर हो गया आपको? Yes, प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। बट आपको आनंद कितना आएगा? भाई शालिग्राम के ऊपर आप तुलसी मंजरी ऑफर कर सकते हो, उनकी डेकोरेशन कर सकते हो, उनको घी से मसाज कर सकते हो, अलंकार कर सकते हो, उनके सामने भागवत पढ़ सकते हो, उनके सामने माला कर सकते हो, उनके लिए लोगों को बुला के कीर्तन कर सकते हो। एक रशियन गुंडा था, गुंडा बहुत मारामारी हुई, भारत में आए तो एक व्यक्ति ने बोला, ये ले तू शालिग्राम, डायरेक्ट दे, बोले ये क्या है? भगवान है पक्का। साधु ने लेके गया, तो उसने पूछा कि ये किससे वर्शिप कैसे करने का? तो बोले इसके लिए भगवान का नाम है। क्या? हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए एक माला करना, फिर इसको वेजिटेरियन भोग लगाओ। तो वो फ्रूट खरीद के लाए उसको, वो खुद नॉन वेज गुंडा आदमी। फिर और क्या क्या करना है, उसके सामने एक बुक पढ़ना है, कौन सा भागवत कहाँ मिलता है, स्टोर में जाओ। तो उसने एक बुक पढ़ना शुरू कर दिया, फिर उसमें लिखा है कि 4 नियमों का पालन है। फिर क्या नियम है? अरे बाप रे, इतना सब करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी उसको लोग इतने लाया है तो करना पड़ेगा, हमने लाया है गेस्ट को, 4 नियमों का पालन किया। फिर धीरे धीरे उसको इतना अटैचमेंट हो गया, वो 32 राउंड कर रहा है। उसने विवाह डिवोटी से विवाह किया, वो पति पत्नी फिर कुछ काम नहीं करते थे, 32 माला करते थे, भिक्षा मांगते थे लोग उनको, और उनके पास 100 शालिग्राम हो गए। एक बार धीरे धीरे बढ़ती, एक शालिग्राम तो और आ जाए। और मृत्यु के समय उसने भगवान के सामने शालिग्राम के सामने चैंटिंग करते करते शरीर छोड़। गुंडा आदमी, भगवान के नाम। ऐसे भगवान जिसकी इच्छा हो गई ना, उसके बाद भगवान आए। आप इच्छा करो, क्या करो? फिर वो भगवान को वर्शिप करने की इच्छा है। लॉर्ड वांट टू बी वर्शिप्ड बाय यू, लॉर्ड वांट टू बी ग्लोरिफाइड बाय यू, ही वांट somebody should cook for him, somebody should glorify him, decorate him, watch to him. किसी का दूसरे का चेहरा क्यों देखना? भगवान को देखते रहो, देखते रहो। भगवान चाहते हैं ना। अभी हम वृंदावन चलने के सामने आंख बंद करके प्रार्थना, अरे आंख खोलो, खोल के भगवान का ब्यूटी देखो। आंख क्या बंद, पागल है ना? एक बार एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी में योगी गया, तो जगन्नाथ के सामने मेडिटेट कर रहा, सडनली वो ऐसा 50 फीट बाहर फेंक गया है। मैं इधर क्यों आया? वापस गया, वापस जगन्नाथ के सामने मेडिटेट, वापस फड़ाक से उसको कुछ तो ऐसा उसके ऊपर गिरा, टूट गया। फिर भगवान को बोला, भगवान ऐसा क्यों हो रहा है? अंदर से भगवान बोले, आँख खोल के मुझे देखिए, मेडिटेट क्या कर रहे हैं, मेरे सुंदर रूप का दर्शन कर। उसने आँख का दर्शन किया, भगवान ने उसको लात मार के पकड़ा, क्या मेडिटेट कर, मुझे देखना। सो इन द टेम्पल वी शुड, कितने लोग 1 घंटा भगवान का दर्शन कर सकते हैं? उतना हमारा स्टेमिना नहीं, 1 घंटा भगवान का दर्शन कर नहीं सकते, 1 मिनट करके भाग जाते हैं। गोपियां क्या बोलती कि हमको ये क्यों दिया, हमको ये नहीं देना था, हमें कांस्टेंट दर्शन देना। आपका क्या लेना है? ब्रह्मा जी को शाप दिया, तुमने इसको क्यों बनाया, आईलिड्स को क्यों बनाया? ये बीच में आए, हमको पता भी चलता है हमारे आईलिड्स कितनी बार जाती है, बट गोपियों को वो परेशानी हो रही,
इतना भगवान की सुंदरता का वो दर्शन। ठीक है, केवल इस्कॉन में क्या हुआ है कि प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन किसी ने पढ़े नहीं, है ना, क्योंकि जैसे आपके घर में शालिग्राम है, ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म आ जाए, आपको सूची मुची का पालन करना पड़ेगा, आपका प्रोग्रेस हो। आप गलत काम नहीं कर सकते, झूठ बोलना छोड़ देंगे, चीटिंग करना छोड़, हम करते अभी भी चैंटिंग करते करते सब कुछ करते, हाँ, सब करना पड़ेगा, तो हमारा प्रोग्रेस होगा। तो ये तो प्रभुपाद चाहते, प्रभुपाद के पास तो एक मिस्टिकल बैग होती थी, किसी ने बताया नहीं, मैंने आर्टिकल में पढ़ा, उसमें 4 गोवर्धन शिला थी, शालिग्राम शिला थी, और हमेशा प्रभुपाद किसी को देते थे वो बैग, अपने पास रखते थे, 4 गोवर्धन शिला और शालिग्राम शिला। उनके बहुत सारे गृहस्थों ने लिखा है कि हमको प्रभुपाद ने एक शालिग्राम दिया था, वर्शिप कर रहा है, उनके गृहस्थ डिसाइपल ने बताया, इसको किसी को बताया नहीं है। मैंने पूरा इसके ऊपर रिसर्च किया है कि कितने प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जीटीओ को भी इतना बड़ा लेके जाना मुश्किल है। शालिग्राम एक छोटे से बढ़िया डब्बे में रखो, उनका पैराफेरना, हैंड करचीफ, गंगा जल का बॉटल, एक चांदी का लोटा है, नॉर्मल लोटा, बस इतना सब सामान एक बैग में बैठ जाता है, कहीं लेके जाओ, उनका सेट करो, चैंटिंग करते बैठो, है ना। ठीक है, मैंने बोला बोल के मत बोलो। मैं आपको आर्टिकल भेजता हूँ, वो पढ़ो, हर चीज के लिए शास्त्र, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, सुप्रीम गुरु कौन है? शास्त्र। ठीक है, बट कॉमन सेंस होना चाहिए। सपोज आपके घर में दूसरे भी नॉन मेंबर है जो ओनियन गार्लिक खा ले, तो आपको समाधान, आपके घर में कोई ओनियन गार्लिक खा नहीं रहा है, कोई चाय नहीं पी रहा है, आपको पीड़े में भगवान का सेवा करने का, फिर कौन आपको रोक सकता है? मियाँ बीवी राजी तो क्यों बीच में कोई आएगा? काशी भाई, भगवान और भक्त राजी है तो बीच में मुझे क्यों आना है? उनका शादी विवाह है ना, भगवान और भक्त का विवाह हो रहा है, तो मुझे डिस्टर्ब क्यों करना है? मुझे तो उनको जोड़ना है। क्या करना है? भगवान और भक्त को जोड़ना है, उनको उनका आनंद, भगवान का आनंद करने दो, हमें बीच में क्यों? ठीक है, मैंने तो 4 लोग भक्तों को मैंने शालिग्राम दिया है। वो कर रहे हैं बढ़िया, ऐसे किसी डेकोरेशन करके डेली मुझे मैसेज कर दे, आज ऐसा किया, आज सिंपल वर्शिप किया, ठीक है। मैंने उनको मिनिमम बोला 15 मिनट करना, मिनिमम 15 मिनट तुलसी के ऊपर शालिग्राम कर को। उनको मैंने राधा कुंड का जल भी दिया है, वो तो और भगवान खुश हो जाए। एक राधा कुंड का तिलक दिया है, एक गुंजा माला दिया है, एक वैजंती माला दिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट भगवान को क्या प्रिय? भगवान को हादी मैंने इसके पहले बोला था, तुलसी की 8 मंजरी, कोमल मंजरी, जिसके बाजू में 2 पत्ते हैं, ये भगवान को अर्पण करो, कृष्ण को करो, किसी को भी करो। ये रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य चेतावत में बताया अष्ट मंजरी, क्योंकि ये अष्ट मंजरी कौन है? 8 गोपियां है, गुंजा माला राधा रानी, जिसे भगवान चैतन्य महाप्रभु हमेशा गुंजा माला रखते गोवर्धन के लिए। गोवर्धन की वर्शिप इतनी आसान है, उसको हमेशा गुंजा माला ऐसी लेपट के रखने का, वो राधा है। और 8 मंजरी कौन है? 8 सखिया है, और उसके 2 बाजू में 2 पत्ते कौन है? मंजरी, एक्चुअल मंजरी, जैसे स्वरूप दामोदर एक गोपी है, सखी है, उसकी 2 मंजरियां कौन है? रूप सनातन, वो 2 पत्ते हैं। तो वो हम भगवान को अर्पण करें तो सबसे खुश है, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। चेतन चेतन में लिखा है, हमने केयरफुली पढ़ा नहीं। आप भगवान के, मेरे पास एक गोवर्धन का फोटो है, उसको मैं हर दिन ऑफर करते रहता हूँ, तो स्वयं गोवर्धन जी मेरे पास है पुणे में। गोवर्धन शिला मेरे पास है, मैंने मंगाई नहीं, क्योंकि मेरे पास एक फोटो है, फिर मैंने वृंदावन में एक ड्यूटी के पास रखी, जब मैं जाता हूँ तो वर्शिप करता है ना। मैंने नहीं बोला भगवान, भगवान चल क्या है, एक व्यक्ति ने आके मुझे दे दिया गोवर्धन शिला, शालिग्राम शिला, फिर एक व्यक्ति के पास रखा है, मैं इस फोटो को वर्शिप करता था। तो भगवान को समझता नहीं मेरे को चाहता है, वो खुद आ जाए। इच्छा चाहिए, क्या चाहिए? इच्छा, फिर कोई बीच में नहीं आता, वो कैसे भी करके भगवान आ जाए। ठीक है, बट वी शुड डिजायर। थोड़ा आई थिंक ब्रेक छोड़ दो, अभी ब्रेक में अभी पूरा करके ब्रेक ले लेंगे। बट एनीवे, जिनके वीडियो ऑफ है उन्होंने ब्रेक लिया होगा, आपको भी पानी पीना तो पी सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आगे जाए हम। श्लोक 8 नहीं हो गया, 9 कोई सपोज टू रीड। हाँ, पढ़ो। जन्म कर्मा च मे दिव्यं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म
Naiti mameti so Arjuna. Translation. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attain my eternal abode, O Arjuna. पढ़िए. Purport. The Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the sixth verse. One who can understand the truth of appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonalist and the yogis attain liberation only after much trouble and many, many births. Even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahma Jyoti of the Lord, is only partial, and there is the risk of returning to this material world. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of Lord, attain the abode of the Lord after ending this body and does not run the risk of returning to this material world. In this Brahma Samhita 5.33, it is stated that the Lord has many, many forms and incarnations. Advaitam, Achyutam, Anadin, Antarupam. Although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same Supreme Personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers, as stated in the Vedas, Purusha Bodhini Upanishad. एको एको देवो नित्य लीला नुरुक्त भक्ता व्यापी हृदय अंतर आत्मा. The one supreme personality of Godhead is eternally engaged in many, many transcendental forms in relationship with his unalloyed devotees. The Vedic version is confirmed in this verse of the Gita personally by the Lord. He who accepts this truth on the strength of the authority of the Vedas and the supreme personality of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculation, attain the highest perfectional stage of liberation simply by accepting this truth on faith. One can without a doubt attain liberation. The Vedic version Tattvam Asi is actually applied in this case. Anyone who understands Lord Krishna to be the supreme, or who says unto the Lord, you are the same supreme Brahman, the personality of Godhead, is certainly liberated instantly, and consequently his entrance into the transcendental association of the Lord is guaranteed. In other words, such a faithful devotee of the Lord attain perfection, and this is confirmed by the following Vedic assertion. Tam eva vidhivati mrityum iti nanya pantha vidhayate ananya. One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the supreme personality of Godhead, and there is no other way to achieve this perfection. Shveta Upanishad 3.8. That there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the supreme personality of Godhead surely in the mode of ignorance, and consequently he will not attain salvation simply to speak, by licking the other surface of the bottle of honey, or by interpreting the Bhagavad Gita according to mundane scholarship. Such empiric philosophers may assume very important role in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. Such puff of mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotee of the Lord. One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, and in this way attain perfection. Hare Krishna. So what Prabhupada says that Janma Karma cha me divyam. One who understand that my birth and activities are glorious. They are not mundane. Even if this truth, if somebody knows, he will surely go back to God.
And one may see Prabhuji after chanting Hare Krishna also, people sometimes show some bad habit. Yes, they are superficial. If he continues bhakti, it will go away. And at the end of the life, he will go back to Godhead. Because that is the promise of Krishna. That is the promise of Krishna. So one should not be too much short-sighted. This person is chanting Hare Krishna, but he has bad habit. Yes, that is a ripened mango, raw mango. Raw mango is very bitter. But as long as the mango is on the tree, it will be ripened in due course of time. It will be ripened it may take lifetimes also. We are suffering in the material from millions of life, eternal. So in that comparison, 1 life, 2 life is nothing. Is nothing. So this happens because of the lack of glories of holiness, the lack of hearing the glories of bhakti. Because we have not heard the glories of the devotional service, we blaspheme the devotee. Why you blaspheme the devotee? Because you have not heard the glories of bhakti. One may see Prabhuji, this devotee was there. He did this blunder. Now he is not coming in bhakti. But still he will get martyr after some time. After next life also. Krishna will punish him. Okay. तो उसने ऐसा किया. तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें गलत किसी को भी स्वीकार करना है. We may have to do the needful for the management. But the principle we should always understand that this person will go back to God after this time, this lifetime and next lifetime. In the heart we should never understand. जैसे किसी डिवोटी ने कुछ चोरी की तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लेके मंदिर को उसको निकालना पड़ेगा. ठीक है भाई, तू बाहर रहे, उसको पैसे का एक्सेस नहीं, लेकिन उसका भक्ति का महिमा कब नहीं होगा. मटेरियल उसको पनिशमेंट मिलेगा, कोई सुपीरियर उसको चास्टाइज करेंगे, ऐसा नहीं कर रहे, भक्ति ठीक से कर. क्लियर हो गया आपको? He should have accepted that Krishna is supreme. I am the eternal. And जो हमारे प्रभुपाद जी कैसे है, उनको भक्ति का वैल्यू पता है. Therefore, if you see how they are liberal actually, they always will say, okay, this much you need, this much, do this. Like sannyasis also, they got married. Prabhupada said, no problem, don't give up bhakti. Don't give up bhakti because they don't have how to maintain it. But still they are trying to do. Okay. But now, in India, we should be educating people what is sannyas, what is brahmacharya. And if not possible, get married. Chant Hare Krishna. So, proper knowledge we should be giving to the people about the glories of the bhakti and how to practice. How to practice. The offense happens when you try to show something which you are not. That is not bhakti. What you are, you practice that much. Don't like ati bhakti chorer lakshmi. When somebody is showing too much devotion, that is a thief. That is a symptom of thief. Like you are crying, Radhe, Radhe, but you are so many anartha, why you are cheating. You do work, whatever job, devotional service, vessel washing service, chanting, attending arati, one will never show his devotion. One should not show his internal devotion to anybody. Keep it secret. Otherwise, somebody will steal it. Externally, yes, normal. जैसे महाप्रभु का भी दिखाते हैं, प्रभुपाद भी कभी दिखाते हैं. प्रभुपाद कितने एलिमेंट्री ड्यूटी थे बाबा का, बहुत ज्यादा. So Prabhupada has explained this word, Janma Karma Chime Divam. No any scientist, intellect, philosopher understand and go back. Only the person who has understood the glories of bhakti, glories of Krishna, who is eager to hear about Krishna, he will surely go back. And you want to go to Vaikuntha, you can go to Vaikuntha with material desires also. The same shloka. Acharya says, there is no condition here that you have to have without desire. Only in Golok Vrindavan, Anya Vilashita Shunya. When you want to enter into Golok Vrindavan in 5 rasa, Madhurya, then only Anya Vilashita Shunya. Like on Vaikuntha planet also, Sarupti. The desire of liberation also is material only. According to Rupa Goswami, if somebody is desiring the liberation, mukti, that is also bhautik ichha. They can go to Vaikuntha, Sarupya, Salokya, Samipya, Sanidya, Sarishti. But go to Vrindavan in 5 rasa, Dasya, Sakya, Madhurya, Vatsalya, Anya Vilashita, Shunya. Clear? That is not told in Bhagavad Gita. That is told by our Acharya.
Therefore, we need Sampradaya. Without Sampradaya, you cannot go to Golok. You can go to Vaikuntha, but not Golok. Okay, that is a very specific thing. Question? So, please send a message that we have covered till 9. मैसेज डाल देना ताकि समझ में आ जाता है, ठीक है। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः अनंत कोटि वैष्णव श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।